सीधे रुक करते राज्यसभा का, जहां पे यूपीएससी में सीसेट को लेकर हंगामा हो रहा है। हुआ था उसमें 11,279 बॉयज बैठे। अब 2008 में जो कन्नड़ विद्यार्थी थे दे आर 14 एंड तेलुगु माध्यम के जो लड़के थे 170 और जो तमिल के बच्चे थे वो थे 98। अब ये जब से सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ है, सीसेट का जो सेकंड पेपर है उसमें एक सवाल नहीं है, उसमें भारतीय भाषाओं का सवाल भी है, अंग्रेजी के खिलाफ कोई नहीं है। मेंस में 300 नंबर का अंग्रेजी पेपर आता है, उसके कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें ट्रांसलेशन का सवाल है। इस सीसेट के चलते ये देखिए 2011 में आप जो है वो जो कन्नड़ के विद्यार्थी हैं वो 5 हो गए, 5 हो गए, और जो वो तेलुगु देशम के जो बच्चे हैं वो 117 की जगह 1 मिनट Please don't interrupt. Wait. Please behave properly. 14. They are reduced to 14. यानी ये सवाल ये है कि समूह क्या सीसेट के लगने के बाद कम हुआ है, चाहे वो ठीक है सर जी, that's enough. Thank you. 1 minute. चाहे वो 1 minute. चाहे उड़िया हो, चाहे सारी। You are not going to be his advocate. Please understand. आपको कहना चाहता हूँ कि ये आपके बच्चे जो है वो तमिल के बच्चे हैं जो वोट। शरद जी प्लीज, शरद जी प्लीज कंक्लूड। ये प्लीज सीसेट 2 जो है वो पूरा स्क्रैप किया जाए, ये बच्चे चाहते हैं। जो सीसेट का 2 पेपर है उसको स्क्रैप किया जाए, लेकिन आपको यूपीएससी ने ऐसा फंसा दिया है कि वो कहते हैं पेपर नहीं बदल सकते। पेपर हमने दे दिए, ऑनलाइन जो है वो हमने एडमिट कार्ड बांट दिए, तो ये सरकार को भी उन्होंने फंसा दिया। I am afraid you cannot indulge in agitational tactics here. You are a senior member, you've been a minister. Mr. Gill, what do you wish to say? Okay. Listen, sir, I have got a unique problem. My language is not even in age schedule. My people who are in the coastal region, they speak Tulu language. Have to learn state language, have to learn national language, have to learn communicative language. When you make this English as a neutral language, sir, what is the fate of those 20-30 lakhs people? If it is not in the age schedule, then it's a different matter. It's a very serious problem. The status quo should be maintained, sir. What is your valid point? Tell me. Let us hear your valid point. Just let us hear your valid point. And don't waste time. No, I'm not wasting time. Please say your valid point now. Valid point. So What is your valid point? Just 1 minute. Let me hear his valid point. Let us see how valid it is. Yeah. Please, sir, these 2 papers. 1 minute. The 2 papers. Let us hear your valid Yes, point. there are 2 papers. Paper 1, 200 marks, 100 bits carrying 2 marks each. There is no problem of that. Paper 1. Paper 2, there are 80 marks. We all know that. No, they don't know that. You know that, but let me tell them. They're up in their arms. Let me explain. 1 minute. Let me explain. 1 minute. Please. The problem is. 1 minute. The problem is. कल्याण सिंह जी 1 मिनट बैठ जाइए, आप बताइए क्या कहना है। The problem is with the 80 marks, sir. In that 80 marks, 8 marks are English comprehension. You are repeating what has been said. The problem is it is 80 marks are advantageous to the technical institutions, the IIMs,
and those who have studied in the convent English medium schools. That is Okay, that's a point of view, Dr. Maitre. Let me find the solution also. Let me suggest the solution. You have said your piece. Thank you. Let me suggest the solution. You That is not the give the solution to the concerned minister. The solution is give a equal weightage for paper 1 All and right. paper 2. Okay. That will Thank take care of the problem. And secondly, taking away English will be disadvantageous to all non-Hindi Okay, you have said your piece. languages. Dr. Maitre, what do This you is a say? problem. Now sit down. Now sit down. Please sit down. Please sit down. Will you please sit down? Sit down. Dr. Maitre. The question of a student going for the main exam or the second or the third phase arises only if he gets through the first exam, the preliminary. We all know that. No, the problem is a student from Tamil Nadu, especially from a rural background, he is not permitted to write the exam in his mother tongue. Whereas I have nothing against my Hindi brother, but my language should be respected. The preliminary exam. All right, fine. Fine. What do you have to say? Come on. Quickly, very quickly, please. Please, yes. नहीं बैठ जाइए अब आप बोलिए. Actually, the preliminary exams, this is objective type, sir. The thing is, the question paper available only in English and Hindi. Nowhere in the world for an English language. Why are we going into all this? English language test, Hindi translation is available. Only for this question, Hindi translation is not available. But thing is, if anybody can pass this 10th level standard question, then how can they pass in the 1 minute, main exam, sir? Okay. Naresh ji nahi, ho chuki baat. Sir, वो बोल question चुके. paper should be available in all regional languages, sir. Okay, नकवी साहब बोलिए. नकवी साहब बोलिए. Just one minute. सर नकवी साहब बोलिए. यूपीएससी एक मिनट भैया, यूपीएससी के मामले में जो छात्रों की, नौजवानों की मांग थी, उसके बारे में सरकार ने संवेदनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ कदम उठाया. निश्चित तौर से ये इस सरकार, यूपीए और बीजेपी की सरकार के द्वारा, सुन लीजिए, कांग्रेस और यूपीए की सरकार के द्वारा पैदा की गई ये समस्या है. उसका समाधान एनडीए और बीजेपी ने, उसके समाधान एनडीए और बीजेपी ने संवेदनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ किया. अगर हर दिन इसी बात पे चर्चा होती रहेगी, हर दिन इसी मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी, तो कम से कम इतना तो यकीन और इतना तो विश्वास होना चाहिए कि जिस आपकी सरकार ने जो समस्या पैदा की, उसके समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और वो समाधान हो रहा है. करे कोई, भरे कोई, प्लीज करा आपने, भर हम रहे हैं और भर भी रहे हैं और उस समस्या का समाधान भी कर रहे हैं. निश्चित तौर से आप यकीन करिए कि भारतीय भाषाओं का सम्मान, भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान, भारतीय लोगों का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, थी और रहेगी. Thank you. All right. You have something, Dr. Maitre, please sit down. Chairman, sir, you see the mood of the House. The statement of the Honorable Minister giving yesterday has not satisfied the members of this House. We, the only members, including the members from Hindi-speaking area, are demanding that the examination should be in regional language, including the Hindi-speaking members. So unless this is taken up, this may spread or take a shape of agitation throughout the country. This should be taken very seriously by the... All right, everybody has had a say now. Can we get on with the question hour? No, this is not the time for it. If you want a discussion, please give notice. We cannot allow the country to go for agitation. Are you giving a notice? Are you giving a notice?
No, sir. Then Now it has to be stopped, sir. if you are raising a privilege issue, No, you sir. know the procedure. If you are giving to take up the discussion without giving the notice, many Mr. Raja, notices you've I had your have given. say. Please sit down. Please sit down. वो बोल चुके हैं, नहीं बोल चुके हैं, राम गोपाल जी बोल चुके हैं। भाई सुनिए, प्लीज लेट अस गेट ऑन विद द क्वेश्चन आवर। Listen, if you want just 1 minute, please. Mr. Silam, why are you standing? Please sit down. Please sit down. Please sit down. मैंने तो आपको पुकारा था, आप नहीं बोले। थैंक यू। No, please. आप बैठ जाइए, please. Sir. नहीं, sorry. Sir, just 1 second. अग्रवाल जी, हमको भी बोलने दो। What happens to the question hour? This will not work. I want to ask this question of the house. नहीं ऐसे नहीं करेंगे. They disturb us. If you don't wish to have question hour, to us. please, I will have a rules committee meeting now. And you take a decision in your wisdom whether you want a question hour or not. Can't carry on. This is not the time for it. तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से हंगामा हो रहा है यूपीएससी में सीसैट को लेकर राज्यसभा के अंदर, जहाँ पे तमाम विपक्षी दल जो हैं, जो छात्र सीसैट का विरोध कर रहे हैं, उनकी अगुवाई करते हुए तमाम बिंदु रख रहे थे कि भला क्यों सीसैट को हटाया जाना चाहिए, और वहाँ पे सरकार अपने पक्ष रखने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सुनते हैं क्या कहना है विपक्ष के दूसरे नेताओं का। Will you please sit down? Honorable members. भाई गिलराम, मैंने आपको पुकारा अगर बिठाएंगे तो मैं करूंगा ना। नहीं, आपने अपनी चांस नहीं ली। Sir, first of all, with great respect for them and for the chair, please listen to others also. There cannot be a monopoly of some people who sit in front of you to take all the time. We also have a share. But that's very unfair. Second, now I have only, please, I have only, bolunga. Don't worry, I can speak. I have only 2 simple points to make. Just one minute. So let me finish. Look, please, Mr. Oh, Chaudhary ji. Please sit down. भाई ऐसे तो डिस्टर्ब करोगे तो हम भी खड़े रहेंगे. So then nobody is going to speak. नहीं, I can't speak. They can't disturb. नहीं हो जाता नहीं. I want to, sir, may I just have my 1 minute? Yes, please. Please, Chaudhary. Yes, 1 minute. I beg of you. Chaudhary, let other languages also have a chance, please. तो राज्यसभा की हम आपको खबर दे रहे थे, जहाँ पे यूपीएससी में सीसैट को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा था।